Okay, online students, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, Yes, okay. ma'am. Okay. So good evening, everyone. Okay, so for those who are meeting me for the first time, my name is Rachita, and I and Bhaskar sir, we are the directors here at Career Express. Okay. So today you have an English class. I won't be teaching you English, but I am here for an important thing that I want to discuss with you all. So the idea is when we talk about college admissions, so the thing that you are doing here right now, attending classes, the 3 classes that you will have weekly, and slowly it will move to 4 for students who are targeting IP Mat, etc. We will have advanced mathematics classes on Saturdays too. Okay, this will be starting after a while. बस ये कुछ टॉपिक्स आपके बेसिक के हो जाए उसके बाद विल बी मूविंग टू दोस. ठीक है, बट दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस. ओके, देर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जिनका कंप्लीट 100% वेटेज सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के स्कोर को रहेगा. ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल हैव अदर कंपोनेंट्स आल्सो, एंड हम लोगों को उनके लिए भी साइमल्टेनियसली ही प्रिपेयर करना है. इट इज नॉट दैट कि हम लोग साल भर सिर्फ ये क्लासेस करेंगे एंड देन लास्ट में जाके सोचेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. In fact, now is the right time when we can focus on other components. क्या है वो components? First of all, let me talk to you about this. आप लोगों का जब भी कॉलेज का प्रोसेस होता है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग द यूनिवर्सिटीज यू वांट टू अप्लाई टू. उसमें हम लोग आपको पूरा मेंटर करते हैं. वी विल बी सिटिंग विद ईच वन ऑफ यू. मैं जो है आप लोगों के साथ बैठूंगी, आप लोगों के इंटरेस्ट ये सबको समझकर आप लोगों को जो भी है, हम लोग आप लोगों को एक कॉलेज के लिस्ट आपको हमारे साथ बनानी पड़ती है. बिकॉज एक आपका भी एक एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे ये 5 कॉलेजेस में अप्लाई करना है, ये 8 कॉलेजेस में. जब तक गोल क्लियर नहीं होगा ना, विजन क्लियर नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तब तक आप लोगों का वो फोकस और वो भी नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले अपने कोर्स को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है. जैसे कि अम्ब्रेला प्रिपरेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू वांट टू गो फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, व्हाटएवर, ये जो हम कर रहे हैं दिस इज एन अम्ब्रेला प्रिपरेशन जिसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेस आ जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट दिस मोमेंट कि मेरा अगर कोर्स ये डिसाइड होता है तो क्या रहेगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है. बट हावेवर डिसाइड तो करना ही पड़ेगा. एंड कब तक डिसाइड करना है, देयर इज अ डेडलाइन टू दिस, एंड वो डेडलाइन हम लोग जो रखते हैं दैट इज 31st अगस्त. ठीक है, तो 31st अगस्त तक आप लोगों का कोर्स क्लियर हो जाना चाहिए पूरा 100%. आप लोगों के यूनिवर्सिटीज की लिस्ट रेडी हो जानी चाहिए. वाई सो? बिकॉज सितंबर के बाद आप लोगों के यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स निकलने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो उससे पहले हमारी लिस्ट रेडी हो जानी चाहिए कि दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू. और इसके लिए आप लोग सबकी मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग होगी, आपके और आपके पेरेंट्स के साथ हम लोग बैठ के ये चीजें फाइनलाइज करेंगे. एंड वी विल नॉट बी डूइंग दैट राइट नाउ, वी विल बी डूइंग दैट इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त ऐसा. ठीक है, तो अभी 3 महीने आप लोगों को यूटिलाइज करना है एक्सप्लोर करने के लिए कि आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या है. वो एक्सप्लोर करने का क्या क्या तरीका है? फर्स्ट इज डेफिनेटली द स्टडिंग द सब्जेक्ट्स यू हैव एट स्कूल. ठीक है, ऑब्वियसली आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आपने 11th में पढ़ा है, अभी 12th पे और पढ़ो. दूसरी चीज है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसके रिलेटेड सब्जेक्ट शायद आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है मास कम्युनिकेशन में, मास मीडिया में, बट दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर हो सकता है किसी का साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, बट इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू माइट नॉट हैव दैट सब्जेक्ट, सो इट्स ओके. बट हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? आप लोगों को यूटिलाइज करना है द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, जिसमें आप लोगों का स्कूल का वेकेशन टाइम भी आएगा. तो आई विल बी, मैं एक क्लास लूंगी आप लोगों की बाद में, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट्स. क्या क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, व्हाट आर वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज जो आप लोग कर सकते हो. बिकॉज देखो एकदम सही बात है, सर्टिफिकेट्स चाहिए हम लोगों को, प्रोफाइल पे भी काम करने की जरूरत है. तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ ऑल दैट, ताकि हम लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो आप लोगों का पोर्टफोलियो भी देखेगी, आप लोगों का प्रोफाइल भी देखेगी. तो इफ यू आर समवन जिसके पहले बिल्कुल भी सर्टिफिकेट ये सब नहीं है कोई भी चीजों में, तो आप लोगों को तो अभी ये 3 महीने में बहुत मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है, तो हम लोगों का डुअल पर्पस सॉल्व होना चाहिए. एक हमारा एक्सप्लोरेशन भी हो जाना चाहिए कि भाई मुझे साइकोलॉजी करना है तो मैं कोई एक छोटा कोर्स करके देख लूं या एक इंटर्नशिप करके देख लूं कि वेदर इट इज वर्किंग फॉर मी और नॉट. अगर मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंस के टर्म्स में तो लेट मी जस्ट चेक कि वेदर इट इज वर्किंग फॉर मी नॉट.
तो आप लोगों को मैं जनरल भी बताऊंगी और आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से आई विल रिकमेंड फ्यू कोर्सेज या इंटर्नशिप्स जो आप लोग कर सकते हो। इंटर्नशिप फाइंड आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, आई कैन नॉट हेल्प यू फाइंड एन इंटर्नशिप, बट मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये इंटर्नशिप से सब ढूंढनी है और कैसे वर्क करना है। ठीक है, सो फॉर दैट वी विल बी कीपिंग अगेन इंडिविजुअल मीटिंग्स, फर्स्ट जनरल मीटिंग एंड देन इंडिविजुअल मीटिंग्स। उसके अलावा हम लोगों को कोई ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, ऑफलाइन कोर्सेज करने हैं, कुछ भी ये करना है तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। ऑल्सो देर आर सर्टेन समर स्कूल्स ये सब भी होते हैं, बट समर स्कूल्स ऑब्वियसली उनका जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, टाइमलाइन होता है, एंड थोड़ा सा जो चैलेंज आता है कि वो अगर गुजरात में हम देखें तो इट्स ओके बिकॉज हमारा जो टाइमलाइन होता है हमारे स्कूल्स के साथ मैच हो जाता है, बट इफ यू टॉक अबाउट समर स्कूल्स इन नॉर्थ इंडिया या फिर ऐसा, तो उनके जो समर ब्रेक्स होते हैं ना वो जून जुलाई में होते हैं जब आप लोगों के रेगुलर स्कूल चालू हो जाते हैं, तो वहां पे वो समर स्कूल के टाइमिंग्स आप लोगों के मैच नहीं होते, फिर आपको स्कूल से छुट्टी लेकर आप 10-15 दिन के लिए जा रहे हो तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो वी विल प्रोबेबली लुक एट सम ऑनलाइन समर स्कूल्स जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इट कम्स विद अ कॉस्ट, तो वो हम लोगों को पे करना होता है। इफ यू आर ओके विद दैट, इफ योर पेरेंट्स आर ओके विद दैट, मे बी वी कैन एक्सप्लोर। ठीक है, बट आई विल शेयर फ्यू ऑप्शंस जो हम लोग वो कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो करना है, बट अपने को अभी टाइम यूटिलाइज करना है, अपने को टाइम यूटिलाइज करना है। अपने को 3 महीने के अभी अप्रैल मई और जून, ये अभी आपको समझना है कि कंपेरेटिवली अभी आप जितने फ्री हो ना 12th में, आगे उससे ज्यादा फ्री कभी भी नहीं होगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप लोगों का रेगुलर स्कूल में, रेगुलर ट्यूशंस में, यहाँ पे हर जगह आप लोगों का लोड बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों के पास अभी जो टाइम है उसको हम लोगों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अभी जब मैं आप लोगों के साथ 1-to-1 डिस्कशन करूंगी तो आप मुझे वो बताओगे कि आप लोगों को कौन कौन से एरियाज एक्सप्लोर करने की इच्छा है, अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस योर इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, फाइन, तो ये हम लोगों को करना है। सेकेंड जो चीज है, जो ओवर द इयर्स मैं हर साल मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, बट येट मेनी ऑफ देम डू नॉट टेक इट, मतलब उसको एकदम सीरियसली लास्ट तक, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग न्यूज। देखो आप लोग एक चीज समझो, मैथ्स यहाँ पे बैठ के आप लोग सीख लोगे, हो सकता है आप लोग मैथ स्टूडेंट्स हो, आप लोग नॉन मैथ स्टूडेंट्स हो, हम लोग उसको कर लेंगे, टॉपिक्स कर लेंगे। नॉन मैथ स्टूडेंट्स को या फिर किसी को जिनको मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा और वो हम लोग आपको यहाँ पे बैठाएंगे। देखो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलती हूँ हमेशा, आप लोगों को हर तरीके की हेल्प मिलेगी, जो भी चाहिए आपको। यहाँ पे 2 घंटे बैठ के इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है 1-to-1 मैथ्स, वो भी हम लोग करवाएंगे, बट वी आर नॉट माइंड रीडर्स। आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं समझ जाऊं आपको यहाँ पे देखकर कि इसको एक्स्ट्रा मैथ्स की जरूरत है, मेरे को शायद ये पता चल जाएगा कि आप मैथ्स में आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है, बट आप एक्स्ट्रा मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वो कम्युनिकेट करना है हमें। आप वो हमें बताओ कि मैम मुझे थोड़ा सा क्लास में मेरे मैथ्स की स्पीड थोड़ी कम है, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मुझे थोड़ी तकलीफ आ रही है, तो इफ आई कैन गेट सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो वी विल अरेंज फॉर दैट। हम लोग बेसिक से भी करवाते हैं, प्लस माइनस से भी करवाते हैं। वी हैव डन दैट इन द पास्ट फॉर ऑल आवर बैचेस। वी डू अंडरस्टैंड कि सबका मैथ्स एक लेवल पे नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट निकालने में तकलीफ आती है या फिर उनको डिविजन करने में दिक्कत आता है, तो डेसिमल पॉइंट्स को कैसे हैंडल करें वो चीजें नहीं समझ में आती है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई आपको घबराना नहीं है। अगर ये बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होंगे ना, तो यहाँ पे तो आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं बट आप अटक कर रहे हो, आपसे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा समझ होने के बाद। तो वो चीज आपको कैसे करना पड़ेगा, वो आपको समझना है कि इट इज नॉट पॉसिबल विद इन द क्लासरूम आवर्स, वो क्लासरूम आवर्स में वो चीजें करवाना नहीं पॉसिबल है, बट आइडेंटिफाई करो कि मैथ्स में बेसिक्स में आपको कहाँ तकलीफ आ रही है, एंड वो चीज फिर हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे। वो आपको फिर इंडिविजुअली 1-to-1 या फिर हम लोग आपको ग्रुप में, छोटे ग्रुप्स में बुलाकर हम आपको करवाएंगे। एंड द गुड पार्ट इज यू गाइस आर स्टार्टिंग अर्ली, तो यू विल गेट इनफ टाइम टू डू ऑल दिस, बट लाइक आई सेड वी आर नॉट माइंड रीडर्स, यू आस्क फॉर हेल्प यू विल गेट इट। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये तकलीफ आ रही है एंड वी विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। ओके, सेकेंड थिंग, आप लोगों को न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ने की आदत 100% डाल लेनी है। अभी राइट नाउ फॉर योर सीनियर्स मैं अभी मॉक इंटरव्यूज ले रही हूँ, अभी भी मैं वही ले रही थी, एंड मतलब इट्स अ नाइटमेयर इवन कंडक्टिंग दोस इंटरव्यूज। मतलब बेसिक क्वेश्चंस लाइक अगर मैं पूछूं कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है? जगदीप धनखड़, यस मिस्टर जगदीप धनखड़। ठीक है, मतलब ये बहुत बेसिक है। हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात, आपके स्टेट का गवर्नर कौन है?
सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। आज अगर पूरे क्लास में एक स्टूडेंट को आ रहा है तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एंड नॉट नीदर शुड यू बी। ठीक है ना? तो आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, दिस इज बेसिक्स। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एडमिशन लेने के लिए करना, इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है ना? इतना तो पता ही होना चाहिए। सो जीके और करंट अफेयर्स वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है। आप लोगों की यहाँ पे जीके की क्लास होगी, करंट अफेयर्स की क्लास होगी, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज एन ओपन एंडेड थिंग। ठीक है ना? ओपन एंडेड थिंग। आपके हम लोग एक दो क्लासेस हम लोग आपकी रख भी देंगे, तो आपको क्या लगता है कि पूरा जीके पूरा करंट अफेयर्स प्रैक्टिकली करवा पाना पॉसिबल है? इट इज नॉट दैट। अनटिल एंड अनलेस यू रीड योरसेल्फ, वो आपको रीडिंग की हैबिट नहीं होगी तो इट इज वो आपको तकलीफ देगी वो। सो 15 मिनट्स पर डे, ये अभी से आदत ही बांध लो आप। 15 मिनट्स पर डे आप लोगों को जो है न्यूज पढ़ना है, फॉलो करना है। चाहे आप 2 आर्टिकल पढ़ो, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट माइंड। लेंथ ऑफ मतलब आप कितना पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा आप पढ़ रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्लोली यू गेट इनटू द ग्रूव और फिर आप लोग स्टार्ट कर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज build the habit of reading newspapers daily for 15 minutes. That's like important, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जीके एंड करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो एक पूरा होता है आप लोगों को एग्जामिनेशन में। मेनी ऑफ द एग्जामिनेशंस विल हैव अ कंप्लीट सेक्शन ऑन जीके एंड करंट अफेयर्स। हाउएवर देयर आर एग्जाम्स जिसमें नहीं भी होता है, बट आपका अगर आप 10 पेपर लिख रहे हो तो उसमें से 6 to 7 में होगा जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन। सेकेंडली आप लोगों को इंटरव्यूज में वो पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दिस इज समथिंग जो ओवर द ईयर्स ही हो पाएगा, मतलब ओवर द टाइम ही हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मतलब स्टूडेंट्स है जो क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हैं, लास्ट क्लास में ज्वाइन करते हैं, कहाँ से 1 महीने में आप 1.5-2 साल का जीके कर लोगे ना? पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें। वहीं पे वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है, वहीं पे वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है। ठीक है? सो लाइक आई सेड, व्हाट आर द थिंग्स वी वांट टू वर्क ऑन? फर्स्ट इज, जैसे मैंने बताया आप लोगों की कॉलेजेस की लिस्ट, वो हमारा अगस्त तक डिसाइड हो जाना चाहिए, कोर्स एंड कॉलेजेस की लिस्ट। उसके लिए वी विल बी हैविंग 1-to-1 मेंटरिंग सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। सेकेंड है कि हम लोग जो है सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन के लिए वी विल बी डूइंग शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स, कोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके लिए। अगेन आई विल हैव अ जनरल सेशन विथ यू गाइज एंड अगेन 1-to-1 सेशंस विथ यू गाइज, अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को क्या सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करना है एंड हाउ कैन वी यूटिलाइज योर वेकेशन पीरियड एंड एवरीथिंग। ठीक है? थर्ड थिंग, वी नीड टू फोकस ऑन आपका जीके करंट अफेयर्स ऐसा, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। वो चीज आप लोगों को करने ही रहना है, कंटिन्यूअसली करना है, अभी से ही स्टार्ट करना है। फोर्थ थिंग, कहीं पे भी आप अटक रहे हो, यू नीड टू आस्क स्पेसिफिकली कि क्या प्रॉब्लम है। स्पेशली मैथ्स में मुझे भी पता है कि चैलेंजेस आते हैं। एंड दूसरी चीज, इंग्लिश को हम लाइटली लेते हैं, वो तो लेना बंद ही कर देना आप लोग। नहीं आता आप लोगों को। ठीक है ना? नहीं आता है। ठीक है? जब ग्रामर की बात आती है तो जब हम लोग बेसिक जो हम लोग करते जा रहे हैं ना, वैसा कुछ ग्रामर नहीं आने वाला आप लोगों को। टाइप्स ऑफ नाउन बताओ, ये वो सब नहीं आने वाला कुछ भी। डायरेक्टली करेक्ट एप्लीकेशन में अंडर लॉट ऑफ वोकैबुलरी, होल लॉट ऑफ वोकैबुलरी। कुछ पेपर्स अगर आप देखोगे, आईपी मैट है सबके, आईपी मैट रोहतक है सबके, मतलब वोकैब ही भरा पड़ा है उसमें। ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग, सब कुछ। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ चीजें करेंगे। आप लोग सब ओटीटी देखते हो? सब देखते हो? मतलब देखते ही हो तो मुझे पता है, बट मतलब सीरीज है सब देखते हो ना? तो देखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस एक चीज हम चालू करेंगे, अब सब सबटाइटल्स के साथ देखेंगे इंग्लिश में। कंपलसरी सबटाइटल्स के साथ देखोगे। ठीक है ना? टर्न ऑन सीसी उसमें जो क्लोज कैप्शंस होते हैं, सबटाइटल्स होते हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखोगे। व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, उस टाइम पे मैं नहीं बोल रही हूँ कि अब बैठ के उसी टाइम पे रोक कर आप मीनिंग देखने बैठो, नहीं। बट इफ यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड या कुछ भी वहां पे, और जब समझ लो कि आप हिंदी भी आप देख रहे हो ना सीरीज, या हिंदी में भी आप कुछ सुन रहे हो, बट जब उसका नीचे वो वर्ड इंग्लिश में आता है ना, तब आपको समझ में आता है अच्छा इसको ये बोलते हैं, तब हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो कुछ भी आपको नया वर्ड ऐसे आया, उसी टाइम पे एक स्क्रीनशॉट ले लेके रख लो एंड एट द लास्ट एटलीस्ट ट्राई कि आप उनके मीनिंग्स तो आप ढूंढ लो, क्योंकि आपने देखा है आज वो, तो समझ तो लो कि क्या बोलना चाह रहा है वो इंसान। ठीक है? सो वॉट एवर यू डू, आप लोग लिरिक्स सुनो, आप लोग कोल प्ले के लिरिक्स सुना, आई डोंट माइंड, आपको जो भी सुनना है सबटाइटल्स के साथ देखोगे और एटलीस्ट उन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ये चीज इंश्योर करोगे। ठीक है? वो चीज आप लोग इंश्योर करोगे। जीके करंट अफेयर्स आप लोगों को डेली बेसिस पे करना है, वोकैबुलरी डेली बेसिस पे करना है, एंड दिस इज नॉन निगोशिएबल, ये आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है?
जैसे मैंने बताया अभी 3 days क्लासेस होगी, बाद में फॉर दो स्टूडेंट्स हुआ टारगेटिंग आईपी मैट ये सब जिनका एडवांस मैथमेटिक्स रहेगा उनकी 4 days क्लासेस हो जाएगी, ठीक है ना, विच विल बी आफ्टर 2 months या जैसा, ठीक है, बाकी टाइम 3 months से क्लासेस 3 days क्लासेस रहेगी। नाउ रिगार्डिंग टेकिंग लीव्स फ्रॉम हियर, वो अलाउड नहीं है। आपको एक चीज समझना है, स्कूल की एग्जाम्स आती जाती रहेगी, साल भर आएगी, ठीक है, आप लोगों को पहले से पता होता है, स्कूल वाले ये तो करते नहीं है कि आज बता रहे हैं कि कल एग्जाम है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। तो 1.5 घंटे कैसे मैनेज करना है टाइम, फिगर दैट आउट पहले से। 1.5 घंटे की क्लास यहाँ पे अटेंड करनी है आप लोगों को महीने भर पहले से टाइम टेबल पता है, तो 1.5 hour का कंपेंसेशन कहीं पे भी कर लो महीने भर, बट क्लास मिस नहीं करनी है। वो हैबिट बन जाएगी ना आप लोगों की, वी हैव सीन स्टूडेंट्स डू दिस इन द पास्ट। वो फिर 15 दिन नहीं आते हैं एग्जाम्स के चक्कर में, जबकि एग्जाम तो 4 पेपर या 5 पेपर्स है, आते पूरे 15 दिन नहीं है, फिर वो नहीं आना होता है फिर, ठीक है, फिर वो पूरा ब्रेक हो जाता है, पूरा फ्लो आपका ब्रेक हो जाता है। आप एक समझो कि आपकी मैथ्स की क्लास वीक में 1 दिन हो रही है, राइट, फिर नेक्स्ट वीक हो रही है, आप 2 हफ्ते से नहीं आए हो, 15 दिन आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्लास में। ऑल्दो हम लोग बैकअप्स करा देंगे, हम लोग करवाएंगे, बट आपके लिए भी तो एक फ्लो भी तो होना चाहिए ना। सो दे सब कुछ पहले से पता होता है ना, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग, सब आप लोग कर सकते हो। कॉलेज में जाओगे, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओगे, मल्टीपल थिंग्स एक साथ चल रही होगी, तो वहां पे तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा ना बैलेंस, तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर। वहां पे तो आप लोग जा ही इसलिए रहे हो ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में कि एक्सपोजर चाहिए, ये सब सुनने को मिलता है मुझे, मैं जब पूछती हूँ इंटरव्यू में कि क्यों जाना है आपको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो करोगे कैसे जब तुम लोग से एक एग्जाम से पहले 1.5 घंटा आया नहीं जा रहा था। समझ रहे हो, तो वो प्रायोरिटाइजिंग अभी से स्टार्ट होगी, अचानक से उस दिन कुछ नहीं हो जाएगा, ये हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है, एंड दिस विल हैव टू स्टार्ट नाउ। तो आप लोग प्लान करो, बहुत ज्यादा कुछ अर्जेंट है, वी डू अंडरस्टैंड कि कुछ कारण से आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो क्लासेस, बट डोंट मेक दिस अ हैबिट कि जितनी टाइम भी स्कूल की एग्जाम से यहाँ पे छुट्टियां, नहीं, डोंट डू दैट। वी ऑल्सो गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस ऑनलाइन। सो कभी अगर आपको लगता है आप दूर से आते हो या ट्रैवलिंग में टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है, तो उस दिन के लिए आप पहले से ऑफिस में आप इन्फॉर्म करो, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक मिल जाएगी एंड यू कैन अटेंड द क्लास ऑनलाइन घर से उस दिन। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी वी कैन गिव दैट, ठीक है ना, दैट फ्लेक्सिबिलिटी वी कैन गिव यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स टाइम इफ यू डोंट वांट टू ट्रैवल, ठीक है ना, बट वी वांट एंड वी स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप लोग क्लासेस अटेंड करो। कोई भी कारण से अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हो, उस दिन प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स से पूछकर या फिर ऑफिस में पूछकर ये पता करो कि आपका क्या टॉपिक मिस हुआ है, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव मिस्ड, ताकि जब हम लोग बैकअप क्लासेस अनाउंस करें ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आएगा कि आज इस क्लास का बैकअप है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका क्या टॉपिक मिस हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये क्लास अटेंड करनी है। आप समझ रहे हो, तो आपको तभी तो रियलाइज होगा ना कि हाँ मेरी ये क्लास मिस हुई थी एंड ये क्लास का बैकअप है, तो आई हैव टू कम एंड अटेंड। तो इसलिए प्लीज टेक इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन केस यू आर मिसिंग ए क्लास, तो यू आस्क योर फ्रेंड्स, कोई रिलायबल बंदे से जो उसने क्लास अटेंड करी है और जिसको पता है क्लास में क्या चल रहा था, ठीक है, या फिर आप हम लोग से ही पूछ लो, ठीक है। तो आप ऑफिस में पूछो और आप जो है वहां पे वो नोट करके रखो कि दीज आर द टॉपिक्स आई एम येट टू अटेंड द बैकअप क्लासेस फॉर, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों को यूट्यूब चैनल का एक्सेस दिया जाएगा, यू गाइज विल बी एबल टू, आप लोग जो है यूट्यूब पे जो भी आज क्लास होती है उसकी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके यूट्यूब चैनल में उसकी रिकॉर्डिंग चली जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ रिवाइज करना हो या फिर आपका कुछ मिस हुआ है, तो आप लोग वहां से रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले मेक श्योर कि आप लोग वो रिकॉर्डिंग देखकर कवरेज तो करके आओ। जैसे मैथ्स की आज क्लास है, नेक्स्ट वीक 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, एक क्लास कोई मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग तो देख कर आओ, ताकि इस क्लास में ऐसे ब्लैंक ना बैठो, ठीक है। होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे बट ज्यादा नहीं मिलेंगे। कितना टाइम देना आप लोगों को एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, डेली बेसिस पे 90 मिनट्स इंक्लूडिंग क्लासेस। वीक में 3 या 4 डेज आप लोग यहाँ पे आओगे क्लासेस के लिए, बाकी जो रिमेनिंग 3 या 4 डेज है आपका, वो आपको 90 मिनट्स का टाइम फिक्स ही कर देना है, उसमें आपका होमवर्क भी आ जाएगा,
आपका वोकैबुलरी भी हो जाएगा, जीके भी हो जाएगा, जो भी है एक्सरसाइज हम लोग दे रहे हैं। हम लोग शॉर्ट आप लोगों को 20-20 मिनट्स के ऑनलाइन टेस्ट देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि आप लोगों की जितनी एग्जाम्स होने वाली है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, तो आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि पेन एंड पेपर पे तो हम कर रहे हैं, बट कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो वो 20-20 मिनट्स आपको टाइमर के साथ स्पीड की प्रैक्टिस के लिए होता है। तो वो 20 मिनट्स के टेस्ट आप लोगों को देने रहेंगे, तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप सिर्फ जो बाकी के 3 या 4 दिन आप सिर्फ 90 मिनट्स, मैं उससे ज्यादा मांग ही नहीं रही हूँ, बट उतना कंसिस्टेंटली देने की जरूरत है। 1.5 घंटे आप फिक्स ही कर दो कि मेरे 90 मिनट्स मेरे एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए है, इंक्लूडिंग क्लासेस। बाकी आप पूरे टाइम स्कूल अटेंड करो, बोर्ड्स का पढ़ो, जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना तो दो। एनरोल कर रहे हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो आप लोगों का जो है सिलेबस जल्दी खत्म होगा, आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी, तो वो चीज का आपको एडवांटेज मिलना चाहिए। अगर आप लोग की भी उतनी प्रिपरेशन रह रही है जो बच्चे लास्ट में अटेंड कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितना टाइम देना है हम लोगों को डेली? 90 मिनट्स। क्लासेस के अलावा नहीं, क्लासेस को काउंट करके डेली का 90 मिनट्स इतना देना है एंट्रेंस प्रिपरेशन को। क्लियर एवरीवन? ओके। कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को? ठीक है। सो अभी जो है हम किसी का आज ऐसा है कि किसी के आज फर्स्ट क्लास है, ऐसा कोई है? अच्छा, योर्स इज द फर्स्ट क्लास, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो अभी जो है मतलब अभी हम लोगों का ये फ्लो रहेगा। आज जो है, आज इंग्लिश की क्लास हो रही है, बट नॉर्मल जो आप लोगों का शेड्यूल होगा, इट विल बी, ये आज फर्स्ट वीक था इसलिए थोड़ा शेड्यूल हमने वो किया था, बट आप लोगों का रेगुलर जो है मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज आप लोगों का चला था, तो मंडेज को इंग्लिश होगा आप लोगों का। ठीक है, एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे में से आपका मैथ्स और एलआर रहेगा। तो वो आप लोगों को शेड्यूल, आप लोग ग्रुप में एडेड रहोगे तो डेली क्या टॉपिक है वो आप लोगों को आ जाएगा। आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स जो है अपने साथ रेगुलरली कैरी करनी है। ठीक है, एंड अगर कुछ भी और कंफ्यूजन हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। ठीक है, अभी आप लोगों को एक वर्कशीट मिली होगी, और जिनके पास बुक्स है, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का चैप्टर है, तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग की वो क्या है बिफोर मैम स्टार्ट्स विद द क्लास। एंड कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो यू कैन मीट मी आफ्टर द क्लास एट द ऑफिस। ठीक है, ओके। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेरीज? आप लोगों को कुछ पूछना है? मैम। ओके, ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लाइक मैसेजेस, और यू कैन टॉक टू अस ओवर कॉल अगर कुछ है तो। ठीक है, मैम।
इधर टच हो जाएगा पूरा. इधर? Yes. ये माइक. Attach it, no? Yes. So you're opening the vocab book? The vocab, the verbal ability book. हाँ सबको दिया. उसका नहीं ऑनलाइन वालों के लिए आपको. हाँ सबको भेज दी. So they have the book, right? Yes. ठीक है. So we're doing subject verb agreement today. Yes, I can use it like a proper stylus. No? Yes, do I have everyone's attention? Some new, some old faces. Subject. What is the subject? The chapter name is subject verb agreement, isn't it? So first thing is, what is subject? Subject in grammar is, okay, this is lagging. Oh, this is really lagging. Steps. Okay, give me a minute. I'll have to get used to this. Everyone, whoever's online, Anvesha, Pranav, Janvi, and Neve. I'll be dictating it, write it down. What is the subject? Subject is the doer of the action. You know about it, right? You know this. This is just revision for you, right? Subject is the doer of the action, meaning the teacher is describing a new chapter. Who is the doer? Teacher, right? So doer of the action is the subject. Why is it important? Because in a complete sentence, you need a doer and you need a verb. Subject and a verb makes the sentence complete. Some exceptions to that rule, where the subject is implied. If I say go, can I put full stop after go? Yes, because the subject is implied. The subject is you. The listener is being asked to go. So you go. You in brackets and go. Full stop. But that's a rare, that's an exception. Generally, we have a subject and a verb in every sentence. Now, the name of this chapter is subject verb agreement. Agreement meaning they have to agree in number. They have to agree in person. If I say I are unwell, that sounds wrong. With I, we use am. First person I, we use am. But if it is second person you, we'll use are. And if I change this to plural, we are unwell. So according to the person, the verb am, are changes. That's one. Second thing is according to the singular and plural, the verb also changes. Now, all this sounds very simple. The problem is when the sentence becomes long. So in that context, I want you to understand how our sentence is elongated. How can a simple sentence become so long that we cannot see the connection between the verb and the subject, and then we make a mistake. So write down this packet of sketch pens, dash expensive. This packet of sketch pens dash expensive. Is why? Tell me. What's your name? This packet is the subject, correct. But sometimes it sounds as if sketch pens is the subject. And hence it sounds as if are might be correct. We call this proximity error. Because the verb is closer to the plural subject, it appears that it should be plural. But actually, we're not talking about the sketch pens. We're talking about the packet.
Write down another example. The feathers of the bird, dash multicolored, are multicolored. Bird is singular, but the subject is feathers. Okay? Now let's look at the book. Rules of subject-verb agreement. First rule, just read it quickly and tell me if you have a doubt. Somewhat similar what I have explained. Second rule, two or more singular subjects, if joined together, take a plural verb. If they are joined together with the conjunction and, then they take a plural verb. If they are joined together using some other phrases, then they may not take a plural verb. Okay, so underline the word and in your book and write down and makes the sentence plural. Right? And will make the sentence plural. Next, nouns plural in form but singular in meaning. Take a plural verb. They've given compasses, tongs, trousers. Add to that list. Write down news. N-E-W-S. News. Is news plural? No. It looks plural because it ends in S, but actually we are talking about a service of news. It's one service, right? Economics. Plural in form, but actually singular, right? When a plural noun comes between a singular subject and its verb, the verb agrees with the singular subject. Number 4, write down singular pronouns. Pronouns which are generally treated as singular in number 4. Just extend over there. It will explain it better. After subject, continue and write down pronouns that take a singular verb, right? Pronouns that are treated as singular. Everyone knows what are pronouns? Yes? So pronouns are words that come in place of nouns. The common ones are he, she, they, we. But I'm talking about pronouns like nobody, somebody, anybody. So these are singular. Somebody is knocking on the door. Is. So write down somebody, nobody, anybody. These are all treated as singular. No one, I'm assuming that covers no one as well, right? Nobody and no one are equivalent. Both are singular. All right. Everyone has to do their homework. Can you see I'm using the singular verb has? Because everyone is singular. Even every boy, every girl is absent. Because it is every. Each, all of you know, I think. Yes, each is also a singular pronoun. Okay? And neither. Can you see neither of the students was involved? Neither, either, they are also singular pronouns. Either of the options is fine. Will you have tea or coffee? Either of the options is fine. So either is. Okay? You can extend that list. Now, subject and verb in person and number. So when two subjects express one idea, the singular verb is used. Rajma and chawal is my favorite dish. This is my bread and butter. Teaching is my bread and butter. You know what is the meaning of bread and butter? Your source of sustenance, your source of livelihood. But bread and butter, they appear to be two, but actually they refer to one idea, right? Beauty and brains, write down this example. Beauty and brains is needed to win the contest. Beauty and brains, they're not taken to be plural. They're taken as one idea, singular. Any of your joint dishes, pav bhaji, right? They're one. It's one idea. So you have to think about the idea. Is it taken as one or is it taken as more than one? Accordingly.
Number 6. Okay, we've already done number 6. When number 4, I discussed it. Number 7. Again, number 7 is also done. Nouns joined by and take a plural verb. 8. If subjects are joined by or, nor, either, neither, please mark number 8 as important. Number 8 is an exam favorite. They create questions around number 8 because it's a little tricky. If you understand the rule, it's easy to apply. If the subjects are joined by or, nor, either, neither, verb, underline this part. The verb agrees with the subject nearest to it. The verb agrees with the subject nearest to it. Now, neither he nor his sister, underline was, and draw an arrow from was to sister. Since sister is singular, was is singular. If the sentence is neither he nor his sisters, so what will become? Were. So write that sentence down. Exactly the same sentence, just change sister to sisters. So you know the verb is decided by the second subject. The subject closest to the verb. Clear? Beauty and brains is needed to win the contest. Is needed. Second sentence, question, point number 8. He or his friends are to be blamed. Underline are, underline friends. Friends determines the plurality of the verb. Number 9. Words joined to a singular subject. So don't get confused with the wording. All they're saying is instead of and. Write down a sentence. The king and his ministers. Kya hoga? Hit. Have arrived or has arrived? Have. Right? The king and his ministers have arrived. Underline have. Write down plural. The king and his ministers have arrived. What is the plural subject over here? No. King and his ministers. The entire, please underline the king and his ministers. Underline that. Write down plural subject. King and his ministers. Plural subject. Yes? So plural subject connects with HAVE, have, the plural verb. Everyone clear? Now change, next sentence, we're going to add a change to it. Write down the king as well as his ministers. The king as well as his ministers. Now tell me, will it be has or have? Have. That is wrong. It will be has. The king as well as his ministers has arrived. Now I'll give you a trick. Before as, add a comma. The king, comma, as well as his ministers, comma, has arrived. Now underline king and underline has arrived and write down main sentence. The king has arrived. Actually, this is the main sentence. You know, a lot of you might be CBSE students. So you know about independent clause. किसी को याद है? Grammar class में सब सो रहे थे नहीं school में. Independent clause is part of CBSE syllabus, but doesn't matter. It's not difficult. The king has arrived. I don't even use complex terms like independent and subordinate clauses. It's just common sense. The king has arrived is the main sentence. If I delete the rest of the sentence, will this part of the sentence stand on its own? Everyone agrees? This is the main sentence. The main subject is king and the verb connects with the main subject. Has arrived connects with king. So we are temporarily ignoring as well as his ministers. And what's your clue? The clue is comma before as and comma after ministers. That part underline, write down extra part. Now I'll tell you why it's important to identify main sentence and extra part. Because it will help you with understanding what is the real subject. It will help you with understanding the punctuation marks also.
In some questions, just give me a minute. In some questions, they test punctuation marks also. Now, one problem that we find in comparative exams, what you're preparing for is, they don't give the commas always. But with time, you will be able to understand that where the commas should have been, because your eyes will be able to identify the main and the extra. बस यही पूछना अपने आप को, if I delete this part of the sentence, will the rest of the sentence stand on its own? If the answer is yes, then that sentence, that part of the sentence that can stand on its own, that is the main sentence. And the verb will agree with the main subject. Ministers is extra. Yes. What's your name? The sentence would have been the minister as well as the king have, so we will use has or have here. If minister The ministers as well as the king Have. we have to take the first subject. You can write that down. The first subject in phrases like as well as, with, please take down the list. सब लिखा रही हूं मैं. As well as, with, together with, accompanied by, along with, okay? So with, together with, accompanied by, along with, as well as, all these phrases, they're called additive phrases. They do not make the sentence plural. They do not make the subject plural. The first subject remains the primary subject. The first subject remains the main subject. You can write that down. First subject is more important. First subject is the main subject. Okay? See, they've given an example. The Prime Minister with his cabinet colleagues is to be present. Is connects with the Prime Minister. Two nouns qualified by each or every, even though connected by and, require a singular verb. All they are saying is, when you have each and every, it indicates that every subject is taken one at a time. Every boy and every girl was given vaccination. The sentence implies I'm taking one boy and one girl at a time. Therefore, it is singular. Because the intention is to emphasize each and every one. So that's why they've repeated. Otherwise, why would they repeat every? They could have said every boy and girl. Then it will become plural. But every boy and every girl, that makes it singular. The emphasis is each and every one. Next, none is singular, but takes a plural. So none can be singular, none can be plural. There's another word like that. All. All is well. Suna hai na? All is well is such an unusual phrase, na? All is supposed to be plural. Why are we saying all is well, all is well? Kya matlab hai? Because in that sentence, all is singular. So whenever the sense of what is it replacing? It's a pronoun. It's replacing something. If it's replacing something singular, then it is singular. If it is replacing something plural, then it is plural. Same for none, same for all. For example, if I go to my neighbor's house and I say, do you have any biscuits? Do you have any biscuits? Okay. And she says, oh, my daughter ate the last one. I have none. Right? None is left or none are left. None is left because she said the last biscuit was eaten by my daughter. So I don't have a single biscuit. If the emphasis is single, I don't have a single biscuit. None is left. But if I reframe the question and then my reference is to something that is in plural, then it will be none are left. So you just have to look at the sentence before. You just have to look what does it replace. There will be a clue. There has to be a clue. Said my daughter ate the last packet of biscuits. Singular. Packet is singular. Hai na? None is singular. Read that one, number 11. None are so deaf as those who will not hear. Here none comes in place of those.
therefore plural. I asked for a maid. Here none comes in place of, give me one maid, just one maid. COVID, we used to say this, ek maid to mil jaye. So that is none, a single maid. Nouns like glasses. This list you need to understand. Spectacles, pants, trousers. You can add tongs, pincers, scissors is there. Anything that has two sides. Spectacles, tongs. Tongs are what? Chimta. You know? Pincers, tweezers. They all have two sides. Scissors, pants, trousers. Write down jeans. Jeans is not there in that list. Write down jeans. Shorts, socks, shoes. Anything that is taken in pairs. I'll explain. That's a usage. Actually, police deserves a special point. What I am talking about are articles that have two sides. So any of these common articles that have two sides, we typically use are. Okay, so I'll say my spectacles are broken. But if I refer to my spectacles as pair, then I will say my pair of spectacles is broken. So when I'm referring to the noun as spectacles, then the verb is are. But if I say pair, then it is one pair. So it is singular. So don't fall for these tricks. These are very simple tricks, right? Police, underline police separately. Okay. Write down police is always taken as plural. Police is an odd term. It is an unusual term. Police is always taken as plural. The police are coming. It's always plural. And this is just something that needs to be learned by heart. There is no why. ऐसा ही है. इसको learn कर लो. ठीक है? This is also another point. Can you see descriptive nouns? The rich, the blind. So when we use adjectives to refer to an entire class of people, we are referring to an entire class. So we always will use the plural. So the rich are insensitive about the poor people. Are. Can you see the guilty? So the guilty are... They've mentioned it. The guilty is an adjective. I'm using guilty to refer to the entire class of people that are guilty. So you will use plural. These are rules that need to be learned and then applied. It's wrong. It's wrong. Number 13. What are uncountable nouns? Anyone who can tell me what are uncountable nouns? Huh? What are someone at the back? Yes. Cannot be measured in numbers is correct. Anything that cannot be counted, it cannot be measured. So stars, countable or uncountable? How many people think stars are uncountable? In grammar, in English, not in science. Stars, uncountable. So I'll draw one star on the board. I'll draw another star, 2 stars, and then third star, and then fourth star. You're counting. So in grammar, stars are countable. But in practical terms, we say stars are uncountable because there's so many. We can't count them. But we're not talking about the practical aspect. The language aspect says stars are countable. What is uncountable? Okay. What else? Water. You can't count. How many water did you drink? I can't say that. I'll say how much water will you drink? That is when we use much. Because something you cannot count has to be quantified. So for uncountable nouns like water, soup, oil, rice, silver, hair. You have too much hair? Yes, hair, uncountable. So whenever I am confused whether something is countable or uncountable, I just prefix it with many or much. And we've learned that much English that our sixth sense will tell us whether it's right or wrong. For example, he said hair, and I wasn't sure.
And I said, okay, too much hair or too many hair? What sounds better? Too much. Same thing for little. If it's little, that means it's uncountable. If it's few, it's countable. There were few students in class today. I will not say little students, but there's very little water in my bottle because water is uncountable. Now the rule over here is uncountable nouns like advice, news, media, stationery, etc. Why are they calling stationery uncountable? I'm waiting for you to finish. Why are they calling stationery uncountable? You're not with us. Which point am I on? Please help him, someone. Number 13. You have your book? Read it. Uncountable nouns like advice, news, media, stationery, weather, progress are singular and favor singular form. Why is stationery singular? Stationery can refer to a lot of things. Pencil, eraser, sharpener. Why is stationery singular? Because it's a collective noun. Are you familiar with collective nouns? If collective nouns, if I'm saying a herd of elephants, the elephants are plural, but the herd is singular. Stationery is also a collective noun. Police troop, singular. Yeah, singular because the troop is the noun. Okay. Nouns like physics, economics, we've done this, plural in form, treated as singular. 15, a singular verb is used when a plural verb, just write down over here for number 15, write down a note. Amount of time, money and distance. Amount of time, money, distance is treated as singular. Amount of time, money and distance is treated as singular. For example, 500 rupees is not a large amount of money. Is. Okay? 3 hours is all you get to write your paper. 3 hours is. And 500 kilometers is a very long distance. Is. So any amount that you're referring to in terms of an entire amount, we're not counting the kilometers. We're not counting the minutes. You're referring to that entire thing as one amount. Therefore, we use it in the singular. One more rule that is not there, but I want everyone to write down. Singular verb must make that number 17. Singular verb must end in S. Singular verb must end in S. What do I mean by that? A boy walks to school. Boy is singular. It will not be walk. It will be walks. And that's pretty obvious. But when you turn it into a question, it can get confusing. Do he know or does he know? Does. So keep it simple. Singular verb ends in S. This has to be learned by heart. And we'll see practical applications of this rule. Plural verb does not end in S. Singular verb ends in S. Okay? Statements that have, number 16, last one. Statements that have many, a great many, a good many. Underline a great many. So can you see that the noun and verb both are plural? Obviously, many refers to plural. Therefore, even if that a is there, it will still be treated as plural. Okay, everyone, do the warm-up exercise quickly. Just the first 30 questions. Because when you're counting silver, you cannot separately count units of it. I can't say, huh? Steel, many steels. Yeah. Yeah, pretty much. Gold. Yeah. Gold is also uncountable. Correct. Because the concept is anything that I can count separately,
like pens, erasers, children, people, countable. Something I cannot count separately, I have to reduce it to drops, grains of sand. That is uncountable. Start with the warm-up exercise, please, quickly. The 30 questions. I'll give you 10 minutes. They're very simple. How do I switch this off? मतलब म्यूट कैसे होता है? उसमें ही करना पड़ेगा इधर माइक पे।
Yes, can we discuss the answers now? I'm assuming everyone's done. Okay. Tell me, what's the first one? Is. Second one? Next to a number of boys are absent. Write down another sentence. The number of students in class dash increased. The number of students in class dash increased. Has. Why? If a number is plural, then why is the number singular? Who can tell me? Anybody online also can unmute. Anvesha, Neve, you can unmute and give me the answer. Okay, but this is not Prime Minister. This is number of students, not class. Not Prime Minister, not class. What are we talking about specifically over here? The number of students in class has increased. At the back, you know? Yeah, everyone, you're looking back. Bolo. Why? नहीं आपके पीछे. आपके आगे. The middle one. हाँ. Students is plural. So, why is it the number of students? Students is plural. So, it should be have now. The number of students has increased. Has is singular. What is the idea? That's my ask. Correct. That is the idea. The idea is that there is one number. Earlier, there were 5 students in class. Now there are 7 students in class. The number has increased. The subject is not students. The subject is the number. And compare that with this one. A number of boys are absent. Here it is a flexible number. The number can increase, the number can decrease. So it's a flexible number. A number of boys are absent. It's plural. The implication is plural. Yes, you have a doubt. Yeah. Speak up, speak up. Learn it. A number is always going to be plural and the number is always going to be singular. And you will see when you use it a couple of times, when you read, you will see a pattern emerging. Whenever it is used as a number, that number can increase or reduce. But when it is the number, it is one specific number. Makes sense. Now that's why we're using the. And that's why we're using a. Got it? Because a can refer to any, but the refers to one number. This is usage actually. The more you read, you will notice these things. Next one. Okay. Anvesha, unmute yourself. Give me the answer of 3 and 4. Is 3 and 4. What is the answer? 3. First 3. is A part of mango rotten. is rotten. Number 4. 2 and 2 makes 4. Make 4. Is it make or is it makes? Make. Make. Because 2 and 2 are plural. Uh, Yes. Okay. 5 and 6. Neve. Neve, please unmute. Give me the answer to 5 and 6. Yes, ma'am. Ah. All the people in the room were silent, Correct. Were. And Yes. 6. and the poet and painter are coming. Okay. This one is not right. Number 6 is not right. The answer is the poet and painter is coming. I'll explain why. Write down. You can add to this list of rules that we were writing earlier. When the is repeated, then it is plural. But when the is not repeated, then that means it's referring to one person. That one person is both the poet as well as a painter. And if I would reframe the sentence to write the poet and the painter, then Neve is right. Then it will become the poet and the painter are coming. We're referring to 2 people over here. Neve, am I clear? Write Yes, down ma'am. the poet and the painter are coming. Because the article the is repeated over here. But when the article is not repeated, that means we're referring to
one person who is both poet and painter. Fourth one, 2 and 2 make 4. Because 2 and 2 don't refer to one idea. 2 and 2 refers to two numbers. 2 plus 2. Got it? So since the implication is plural, we will use plural verb. Make. Make is singular or plural? Plural. Because make does not end in S. Make is plural. Yes. Fifth, all the people in the room were silent. All the people is plural. Were. 7, make 4. Number 7, I was one of the boys who, please make that correction. That's a typo. Everyone, online as well. I'm writing it for your benefit. The answer of number 7, I was, now this is correct because obviously I is singular. I was one of the boys who, ये गलत है. There's a correction over here. Who were elected. Why is it were? Because who refers to boys. Please write this down. In this sentence, who refers to boys. Another example. She is one of the greatest musicians who ever lived. क्या होगा? Has or have? Have. H-A-V-E, have. Why? Because who refers to musicians. Write this down. Same thing. Again, whenever you have this one-off structure, the second subject will always be plural. Then only one-off makes sense, na? So one of the greatest musicians, one of the boys, and the who refers to the, it's always true that the relative pronoun will refer to the subject that comes just before it. So who refers to musicians? Clear? Therefore it is have. What's your name? Rahul. Rahil. Puli. Very interesting correction in this, That is the one I said, sub number 7. That's why I've written it down. This is number 7. Instead of was, it's written was, na? You cancel it and write down word. Number 7. It's written word in your book, not in my book. Thank you. Okay. Number 8. None of them is at fault because I'm saying not a single one of them is guilty. His means are plenty. What does means refer to over here? Methods, ways of getting things done. It is implied. So his means are many, plenty. Both John and Peter are my sons. 2 people, both. Both will always be plural because both will refer to 2. Each of these persons is responsible. Number 12. Now, can you see law and order refers to one idea? So, is. 13. None of them have or has. Half say have, half say has. Here we are referring to them. Whatever none is, it is a part of them. And here, if you want to replace it, can you replace it with not all or not a single one? Which one will you replace none with? Do it. Not a single one of them dash agreed to the proposal, or not all. So, now let's see. None of them has agreed to the proposal. That's not a single one. And none of them have agreed to the proposal.
appropriate to the proposal. Honestly, even I'm confused. So let me get back to you on 13. Because I think it should be have, but I don't have a clear logic for it. Circle 13, I'll get back to you in the next class. Okay, maybe at the end of the class, I'll tell you. Them is always more than one. Huh? 1 minute, yes? No, what does none refer to? Them is plural. What the none can refer to 2 people? It can refer to 3. So then it is plural. So I think it should sound plural. It sounds plural to me. But none of them has agreed to the proposal will be right if none refers to not a single one. So we don't have a preceding sentence. If there would have been a sentence before this or some other clue, then the answer would have been clearer. So 13, I'm not sure. Mark 13, I'll let you know. 14, this is simple. Slow and steady is one idea, wins. The wages have fallen, HAVE, have. 16, your choice of subjects. What is the subject? At the back, green shirt. What is the choice? What is the subject? What is the subject of the sentence? What are we? Choice. Therefore, choice is singular, right? 17. Now here, this is a way of expression where the subject comes later. What is the subject in this sentence? Mistakes. So there are several mistakes in your book. Time and tide refers. Yes, Neve, unmute. See, I can't see it. You unmute and ask the doubt, Neve. No problem. Thank Yes, you. ma'am. Bolo. Ma'am, in the eighth sentence, if we are considering them as a plural, then why are we not using is? I'll get back to you on number 8. On number 13, I'll get back to you, Neve. I need to confirm the answer. No, ma'am, I'm talking about eighth sentence. 8, Yes. none of them are at Uh, fault. Huh? What is your doubt? Repeat. No, ma'am, I was just saying that R would be the answer, no? R is the answer. Okay, okay. I thought that you spoke about is. No, R is the answer. This one is clear. Okay, R is the okay. answer. Okay. Yes, ma'am. 18, time and tide is a singular idea. It's one idea. So time and idea, wait, I'm sorry, wait for no one. Time and tide, this is, अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है? Because time and tide refers to a singular idea. But these are some peculiarities of English that the examiners fully exploit. Time and tide, wait for no one, it needs to be learnt. It's not waits. Use मैम singular idea तो waits होना चाहिए, but ऐसा नहीं है. So this you have to just learn. Time and tide, wait for no one. Number 19. Much of the fun was spoiled. Please underline fun. Uncountable noun. Uncountable nouns are always referred to as singular. So much of the fun was spoiled because you can't count fun. 3 funs, 4 funs, ऐसे तो होता नहीं है. So you cannot use a plural verb for uncountable nouns. The committee, now committee is a collective noun. It is taken as one. There is another rule with committee that I will do later. Mark number 20 as important. Because in some sentences, committee takes plural verb. Normal rule is singular. All collective nouns, singular. Herd of elephants is coming. Flock of birds is flying in the sky. Flock, herd, all taken as singular. But committee, jury, and there's another word. These 3 words they can be taken as team. Committee, jury, team. They can be taken as singular or plural depending on the usage. Another peculiarity that is fully exploited. So we need to learn it. Okay. But here it's straightforward. The committee has published its reports. Committee is singular. 21.
Neither of the students is. Please underline neither. Neither is a singular pronoun. Neither, either, always singular. Either you or she is. How do you know? No, she. Did you forget the rule? She is closer to the verb. She is singular. Therefore, verb is singular. Yes, Rahil. The rule says that we have to look at the nearest subject. Not in 21. In 22. Either you or she. Read number 21. Read the sentence. Neither of the students dash right. So you've misunderstood the rule. The rule says when there are two subjects connected by or neither, either, whatever, there has to be two subjects for that rule to be applicable. Understood? 23. Yes, Pranav, can you give me the answers? Unmute and give me the answer of 23. Did I skip? Has, 23, yes. yes, ma'am. Has the jury has decided the case. The jury has decided the case. Correct. 24. Continue, Pranav. 24 was Crowd the of crowd of people was correct. Another collective noun taken as singular, one entity. A crowd of people 20 was in the room. 25 is Yes, 6 kilometers is. Okay. Next person, Janvi. 20, Thank you, Pranav. Janvi, unmute. Yes. Give me the rest of the answers, please. 26 is, Yes. No news. 27 have, 1 minute. No news is good. 27 is. Yes, go on. 26, I'm sorry. 27 have, 27, none of the girls has brought the book. That means not a single girl. None comes in place of not a single over here. Therefore, it is singular verb, has. Yes, go on. 28. have, Lots of men have come. H-A-V-E. Lots of men are, obviously it is plural. Yes, 29. are, All men are mortal. Obviously, it's plural. 30. is, Yes, thank you, Janvi. Neither of the students is right. You're taking each student one at a time. So neither she is right nor he is right. Okay. Now exercise 1 is as it will appear in the examination. We have some time. Let's do the first doubts. Anyone doubts online, offline? Anybody doubts? No? Yes, Neve. Unmute, tell me. Yes, ma'am. Ma'am, in the 27th sentence, if the noun girls is given and Yeah. none is replacing the noun girls, then why aren't we using the plural form? We are not using the plural one because over here, none stands for not a single girl. We are emphasizing that nobody has brought the book. Not a single girl has got the book to class. So when you understand that the implication is not a single, that means it is singular as. Understood? Neve, am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'll give you 3 minutes and you'll do the first 5 questions quickly. I'll take the doubts. Everyone else will start with the questions. Just yes, what's your doubt? The poet and painter refers to one person because the article is not repeated. That is the clue. The is only said once, so it refers to one person. Okay. What happened, Rahil? Have you done with the first 5 sentences? No? Then solve them, please. Don't talk. Huh?
Discuss later after the class. Yes. Doubt? Good. So that why will that affect the verb? Little is going to be singular and few is going to be plural. Few students are present. Okay, little is known about her. So it will depend upon the usage. The usage will tell you whether the subject is singular, the subject is plural. Give me a sentence and I can help you better. When you think of a few, then give me the sentence. You tell me. A few of them, you said has. Why did you say has or have? Why? Because you're saying some of them. A few is equal to some. Some is plural. Therefore have. Okay. The few will be singular most of the times because it refers to a specific quantity. The. You just did that. Yeah, cross-country discussions. Doubt? You have a doubt? 26. Yes, tell me. 1 minute. We get into their view as well. 26. No news. Actually, the entire idiom is no news is good news. It's an idiom. No news is good news. It's a subject that looks like it is plural. It's not uncountable. News is news. News is, it looks, let me see. Give me a sentence about news. Make subject, news the subject of the sentence. Batao. Why are you looking at her? Was it her doubt or yours? Then I read the news for them. what is the subject in this sentence? I. Let's try again. Make news the subject of the sentence. News is beneficial for Students. Please. Because it looks as if it is plural, because there's an S at the end, but it's not plural. Rule number? Huh. Really? 13. And rule number 4. Rule number 4, what did I make you write? Yes, because news looks. No. You continue with rule number 4. News in rule number 4. Because what did I give you? News, economics. Those are terms that appear to be plural because they have an S at the end, but actually they are singular. Economics is my favorite subject. I will not say economics are my favorite subject. Isn't it? Simple. that is wrong. Yes, I need a pair of trousers. Done. Why are you looking so bored? Done. Everyone done? First 5 sentences? Yes, give me the answer. You can just give the, shh, everyone quiet. You can just give the letter that denotes the answer. So 1, is it A, B, C or D? How many people for Bombay? B. You tell me the answer. Why is it B? Because either Naresh or Deepu, it is given verb, but it will come was. It will be was because Naresh 1 at a time, Deepu 1 at a time. Either Naresh or Deepu 1 at a time. So it is was. Correct? So the answer of number 1 is B. Number 2,
Number 2, the answer is, who says A? Bolo, what's the answer? Why is it A? That is The unskilled class of workers is the most exploited class. So R will change to is, correct. Number 3, a collection of Indian artifacts. Why word? Who says word? So, I was waiting for that question. The question is valid. So please pay attention. You remember I taught you this? This is the same rule. Which and who, they're all relative pronouns. What sits next to which? Collection or artifacts? Clear? That explains why it is a collection of Indian artifacts which were taken. Can you see how you apply that rule? Right? So write down in number 3, which refers to artifacts, because artifacts is closer to which than collection. Okay? Number 4, number 3, what is the letter? A. Yes. Number 4, someone online. Anvesha, number 4. C. Huh? C. C for cat. Yes, ma'am. Why is it C, Anvesha? What's the correction? Come down. Calm down. Okay, someone will tell me to catch someone. At the back. Yes, sorry to interrupt your conversation. Why is it calm down? In number 4. Rahil, you're my next target or your neighbor. आपका नाम मैं भूल गई. नहीं आप ही का पूछ रही हूँ. हाँ यथार्थ. बोलो. At the back. What is the answer of number 4? I'm going to buy a computer as the prices comes down. What is the answer? C. What's the correction? So what is the subject of this verb? What come down? Prices. And plural verb does not end in S. Therefore, it is come down. Right? It's C. 4, the answer is C. What is the answer to number 5? Yatharth. Yatharth. Huh? No error. Aisa? Don't help him. Don't help him. Okay, what's the answer? Why is it A? Company has Pakka? Yes. Now others, you can ask doubts. Bolo. Huh? Huh? Why would you change the subject? No. So mixed exercises will come later and we'll help you to identify what can be changed and what cannot. But for now, don't focus on changing the subject. This chapter is about verbs. So don't think about the subject, changing the subject. Change the verb. Okay? Thank you. Class is over. If you have doubts, you can stay back. Ajo, idhar ajo. Yes. Neve, you have a doubt. Yes, ma'am. Neve, just wait for 2 minutes. They're leaving. It'll get Yeah, quieter, sure. then I can take your doubt. Yes. Okay, sir. And in this third sentence, if we rephrase it and say that a collection of Indian artifacts was If I remove a which, then it is was taken. If I take a collection of Indian artifacts was taken, tab sahi hai. Because of which it became were. Because which refers to artifacts. So, Ma'am, so I understood the rules, but how do we identify which rule to apply? Like in this which wala question, the musicians one. because I could apply the rule because I know that which, who, that, when, where, they are relative pronouns that are used to connect sentences. If you have that knowledge, then you can apply it. Basically,
But you need to learn and you need to apply. You need to do the exercise. So you'll be getting homework exercises on your WhatsApp. Please do them regularly. Don't let it pile up. Yes. That's the worst thing you can do. Wrong, right? A noun plural in form but singular in meaning. Take a singular verb. It should be. Ah, this is the typo in the new. I don't have this one. Nouns plural in form but singular in meaning. Take a. So you know this. What they're saying is just delete this part. Nouns plural in form. Take a plural verb. So if it is compasses, tongs, trousers, it's plural in form. It will take a plural verb. Okay. And if it's like news and economics, That it will is. be singular. Ah, Okay. that's what they mean to say. And- It's a typo in between. And like for every boy and every girl, we use singular. This is correct. And then every boy and girl, Plural. plural. Because you've not repeated every. So every boy and girl were. Uh-huh. Okay. Thank you. Let me just say, just give me a minute. Every boy and girl were. One vaccination. Boy and girl were given. It will still be was. Yes, yes. Was. Because every repeated and every singular was. Abhi bhi was hi rahega. Yeah. You're welcome. Just 1 minute, one more doubt. Neve, unmute. Tell me what is your doubt. Yes, ma'am. Ma'am, as you told that which the words like which and who can be used as a relative noun. So are there any other words which can be used for the same purpose? Are you asking about relative pronouns? Yeah, relative pronoun, which in which we can We use will- these rules. We will be doing relative pronouns more in detail. Don't worry about that. That will be explained further, like which, who, when, where. That will come gradually, Neve. Not to worry. Okay, so ma'am, in general, like I can say like if relative pronouns are used, then we have to consider the nearest noun. The rule that I have written on the board, that is the rule for now for subject-verb agreement, that the relative pronoun will refer to the subject closest to it. Like who refers to boys, है ना? Who refers to musicians. For now, this will suffice. Then gradually Okay. we'll teach you the other rules as well. Yeah? Yes. ma'am. Complete this Thank you. exercise. You'll get your messages for the homework. Please don't let the homework pile up. Do homework every week regularly. Okay? All right. Bye-bye. Ma'am, Ma'am. Yes, Anvesha, do you have a doubt? yes, ma'am. Ma'am, I did not understand the 16th point. Can you please repeat? I'm sorry? The 16th point, statements that have many, a great many, that one. Huh. What is your Could, doubt? could you please repeat that? I did not understand. They're saying that many, a great many, a good many, these are plural subjects. And hence they will take plural verbs. Right? Don't get fooled because of the a. The article a does not make it singular. A great many is plural. A good many is plural. Many we know is plural. That's all they are saying. And accordingly, they've given the sentences. A great many farmers are working. Many boys were accused. Plural subject, plural verb. Yes, have I answered your question, Anviksha? Yes, ma'am. Thank you. All right, thank you. Ma'am. Bye. Bye. Ma'am. Yes, No, may I ask one more doubt, please? you have one more doubt. Sure. Yeah, Go. ma'am. Yeah, ma'am. Okay. In the 16th rule that the teacher said that many, a great many, and a good many. So, ma'am, when we use a many and when we use this only many in the sentence. This is just for emphasis. Okay. So will many add meaning to the sentence? Like Many, a great many has no technical difference. A great many is just used for emphasis. To emphasize, to highlight the idea. it That's it. doesn't add any meaning, any additional meaning. Huh? Sorry? So it doesn't add any additional meaning to the sentence. Huh? No, technically not different. Okay. Okay. Thank you, All ma'am. right. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. How do I end? So I had noticed the difference. You had so पर इसको वही चीज है कि many must have that quality. अरे वो क्या है एक पर्टिकुलर उसमें ना आता है
हाँ, कैसे इसको करें? ये क्रॉस बटन है ना, हाँ, नहीं एंड मीटिंग और ऑल।